Hello everyone, welcome to OPSC study. My name is Siddharth Panda and in today's Prelims Booster 2024, we will discuss another important topic of the day and the topic is Attorney General of India. Before coming to the topic, OPSC study has launched another Prelims Test Series program 2024 which will be starting from 7th of July 2024. So as you know कि October मासरे हमारा prelims exam हवारा अच्छी. For that you have only 3 months of time. So without wasting any time, let's join the test series. Let's explore all the probable questions that might be come in the examination. You will be also provided with solution video and also solution PDF. तो आपण गोटे जिनस मन रखंतु बिना प्रैक्टिस रे केबे मध्ये कोनोसी एग्जाम क्रैक ही पारे नाही. पेशेंस, परसिवियरेंस एंड प्रैक्टिस इज मस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. तो आपण डेफिनेटली टेस्ट सीरीज जॉइन करंतु एवं एग्जाम दबा स्टार्ट करंतु. सो कमिंग टू द टॉपिक ऑफ द डे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक रहउची प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव रु मेंस पर्सपेक्टिव रु मध्ये. तो एज यू नो कि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज अ फेडरेशन. सो इंडिया इज जो जला हमको जो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. तो एठी कोन रहउची ना सिटीजन्स हैव देयर राइट्स रहउची सिटीजन मानकर. You know Indian government has to follow also DPSP को follow करिया को पड़े तारा laws रे मध्यम. Similarly, when we talk about federation, तो India has to maintain the center state relation, interstate relation. ये सब जिनिस India रे maintain करिया को पड़े. तो when such big responsibilities are there, so एठी कौन हुए dispute हवा बहुत मतलब easy कथा. Dispute कोन जगह रे मध्य बाहरी पड़े, center state मध्य रे dispute बाहरी पड़े. फंडामेंटल राइट्स को नहीं कि को लॉज रे आपनकर डिस्प्यूट बाहरी पारे. डीपीएसपी को नहीं कि लॉ रे डिस्प्यूट बाहरी पारे. देयर माइट बी सम लॉज व्हिच माइट बी कंसीडर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. सो एई सब जिंस जते बेले आपनकर डिस्प्यूट बाहरे, ऑल द डिस्प्यूट गोस टू योर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दैट इज जुडिशियरी को जाए. सो एठी जते जुडिशियरी को जाए, जुडिशियरी रे आपनकर दुईटा पार्टी थांती जे कि जने क्वेश्चन करे या जहार वन इज एग्रीड पर्सन, सेकंड होची आपनकर जहा अगेंस्ट केस जाई थाए. तो जते बेले एठी इंडियन गवर्नमेंट आपनकर इंडियन गवर्नमेंट अगेंस्ट रे केस जाउती. सो इंडियन गवर्नमेंट को मध्ये जरूरी पड़े गोटे वकील रो जरूरी पड़ता है. एंड दैट वकील दैट आपनकर एडवोकेट जोटा रहउची, दैट इंडियन गवर्नमेंट रो से एडवोकेट को हमें कहूचे कोन ना अटॉर्नी जनरल बोली की कहउची. बहुत सिंपल जिनस रहउची. सो अटॉर्नी जनरल किए ना गवर्नमेंट रो, इंडियन गवर्नमेंट रो जे वकील ताको हमें कोन कहउछु ना अटॉर्नी जनरल बोली की कहउछु. सो इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट. लाइक आपनकर यूपीएससी हे गला, लाइक आपनकर इलेक्शन कमिशन हे गला, फाइनेंस कमिशन हे गला. सिंपल आपनकर आपन जानि छथि पार्ट वी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो अछि, पार्ट वी रे कोन यूनियन एग्जीक्यूटिव मान को विषय डिस्कशन करा हिची. से पार्ट वी रो गोटे आर्टिकल होछि आर्टिकल 76 व्हिच टॉक्स अबाउट योर कौन ना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. Attorney General of India is a constitutional body which is mentioned in Article 76. It is an important question generate here. Now, he is the highest law officer of the country. Definitely, जो the government रो वकील माने, he is the highest law officer of the country. Definitely. And he is the chief legal advisor to the government of India. He advises the union government on all the legal matters. All the legal matters रे जो थी गवर्नमेंट को लीगली एडवाइस नवार था. नॉर्मली आपण कहा टू एडवाइस नहीं होती लीगली, लीगल मैटर्स ऊपर वकील टू नहीं होती. सिमिलरली गवर्नमेंट कहा टू नहीं था, अटॉर्नी जनरल टू नहीं था. तो ही इज द चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट. ना गोटे जिनस देखंतु कि हाउ द यू नो देयर जो आम अटॉर्नी जनरल अच्छा केमती से अपॉइंट हुआ कौन होती डिटेल से विषय जाना. सो वन मेजर आर्टिकल इज आर्टिकल 76 जी कहूँ कि प्रेसिडेंट लाइक आप जानते मोस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव को जो आप एग्जीक्यूटिव्स अच्छा सब एग्जीक्यूटिव को किए अपॉइंट दियंती, प्रेसिडेंट अपॉइंट दियंती. सो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी द जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट. ये बड़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आछी कि अटॉर्नी जनरल जी से गोटे जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हवा पई तांगर क्वालिफिकेशन थिबा दरकार. तो कौन क्वालिफिकेशन अच्छी इन केस ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो मन रखी था फर्स्ट जिनस मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया. ये तो आप जानते कि सिटीजन ऑफ इंडिया हवा दरकार. सेकंड जिनस कौन कि हाईकोर्ट रे 5 इयर्स कौन होइथिबा दरकार ना से जज होइथिबा दरकार. आइदर नहले कौन ना हाईकोर्ट रे 10 इयर्स जाए से कौन होइथिबा दरकार, लॉयर होइथिबा दरकार या एडवोकेट होइथिबा दरकार. तो यही जदि तीनटा कंडीशन सैटिस्फाई होची किंबा जदि प्रेसिडेंट को आखिरे से गोटे कौन होइथिबा दरकार ना एमिनेंट जूरिस्ट
एमिनेंट जुरिस्ट हेतिबा दरकार एई जदी कंडीशन सैटिस्फाई होची देन ही इज क्वालिफाइड टू बी ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नाउ एई सब क्वालिफिकेशन थिबा लोक ही गोटे अटॉर्नी जनरल हेई पारिबो Attorney General government ro okilo it shall be the duty of the Attorney General to give advice to the government on India upon such legal matters in the performance of his duties the Attorney General shall have the right of audience in all the courts in the country very important question कि Attorney General जो अछंती Attorney General कोनोसी भी कोर्ट कंट्री रो कोनोसी भी कोर्ट को से जाई परिबे he has the right of audience मन रखितांतो से कोनोसी कोर्ट को भी जाई परिबे गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करिया पाई सो ही हैज द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया मन रखिबे द अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट मन रखितांतु कि जेहेतु इट इज ए एग्जीक्यूटिव बॉडी सेकंड जिंस कोन एटा होची गवर्नमेंट रो वकील तो एटा गुड जिंस मन रखितांतु अटॉर्नी जनरल इज द ओनली एग्जीक्यूटिव जहा करो एटा होची गोटे कोन ना पार्ट टाइम जॉब मन रखिबे एटा गोटे कोन तांकर पार्ट टाइम जॉब कोन माने गवर्नमेंट रो वकील हवा सहित सहित से निजर प्राइवेट प्रैक्टिस मध्य करि पारिबे लाइक गोटे आपण वकील को हायर करूछंती जरूरी नुह कि से केवल आपण को केस ही लड़िबे ता सहित दुईटा केस एक्स्ट्रा मध्य लड़ी पारिबो से सिमिलरली जदियो एटा गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट स्टिल ही इज नॉट ए गवर्नमेंट सर्वेंट अटॉर्नी जनरल इज नॉट ए गवर्नमेंट सर्वेंट मन रखितांतु he has कोन तांकर प्राइवेट प्रैक्टिस मध्य से करि परिबे सो एठी मन रखितंतु अटॉर्नी जनरल ही होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ता माने होची प्रेसिडेंट कोनोसी टाइम रे मध्य गवर्नमेंट रो निर्देश क्रमे एज कहार से वकील गवर्नमेंट रो वकील तो गवर्नमेंट रो निर्देश क्रमे को टाइम रे मध्य से बाहर कर दे परिबे अटॉर्नी जनरल को and shall receive such remuneration as the president may determine conduct of the government of business मन रखितांतु गवर्नमेंट डिसाइड करिवो या फिर प्रेसिडेंट डिसाइड करचंती कि कोन तांको रेमुनरेशन जो पैसाटा मिलिबो केते पैसा मिलिबो कोन दैट इज डिसाइडेड बाय द बिजनेस कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट करिबारे तांको केते पैसा दरकार पड़िबो दैट इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट इन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जोटा रहउची तो एतिकरा हम गोटे जिंस जानले अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट मन रखितांतु he holds the office during the pleasure of the president this is also correct तृतीय जिंस होची तांकर जो रेमुनरेशन ता अछि एटा के डिसाइड करूची ना प्रेसिडेंट डिसाइड करूचंती देन आपण देखंतु आउट जिंस रहउची कोन ना आर्टिकल 88 जोटा रहउची ई आर्टिकल कोन कहउची राइट टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउस एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेस एंड कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट बहुत इंपोर्टेंट जिंस नॉर्मली पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स रे के पार्टिसिपेट करंती पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स रे पार्टिसिपेट करंती आपनकर कोन जो यूनियन एग्जीक्यूटिव्स अछंती ता सहित सहित बाकी एमपीज माने पार्टिसिपेट करंती हाउएवर अटॉर्नी जनरल इज आल्सो तांकर आर्टिकल 88 अंडर रे आपनकर अटॉर्नी जनरल को पावर मिलुची कि से मध्य से कोन करि परिबे ना पार्लियामेंट रे मीटिंग्स रे पार्टिसिपेट करि परिबे सेटी से ही हैज द राइट टू स्पीक से सेटी कथा मध्य आई मीन भाषण मध्य दे परिबे स्पीच मध्य दे परिबे हाउएवर ही डू नॉट हैव द राइट टू इट मन रखथन डोंट हैव द राइट टू वोट रो अधिकार कहा को अछि सर वोट रो अधिकार सिर्फ आपनकर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मान को अछि तो एठी तांको राइट टू वोट नाही इवन ही कैन बी आल्सो बी ए मेंबर ऑफ एनी पार्लियामेंट्री कमिटी पार्लियामेंट्री कमिटी रे मध्य से मेंबर हे परिबे आ सेठी मध्य से सब जिंस करि परिबे मध्य राइट टू देयर इज नो राइट टू वोट मन रखितांतु नेक्स्ट थर्ड जिंस कोन रोची आर्टिकल 105 जोटा कहउचे आर्टिकल 105 टॉक्स अबाउट द पावर्स प्रिविलेजेस इम्यूनिटीज ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये तीनटा आर्टिकल डील कर आपनकर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सहित रिमूवल जो एज आई सेड तो तांकर रिमूवल को सी कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट प्रोवाइड एनी ग्राउंड एनी प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ होम अटॉर्नी जनरल सिंपल जिंस ही होल्ड्स द ऑफिस प्रेसिडेंट रो प्लेजर को से सैटिस्फाई करंती जदी प्रेसिडेंट जो टाइम रे चाहिबे तांको बाहर कर दे परिबे देयर इज नो ग्राउंड फॉर योर रिमूवल ऑफ योर अटॉर्नी जनरल नाउ देखंतु व्हाट आर द ड्यूटीज एंड द फंक्शन परफॉर्म बाय द अटॉर्नी जनरल कोन कोन ड्यूटीज अछि देखंतु तो फर्स्ट जिंस रहिला एज चीफ लॉ ऑफिसर हिसाब रे ड्यूटीज ऑफ द इंक्लूड कोन कोन एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स एज रिफर्ड टू हिम बाय द प्रेसिडेंट सिंपल जिंस एज प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड तो गवर्नमेंट रो कोनोसी भी लीगल मैटर को किए रेफर करिवे आपनकर वकील को या अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट रेफर करिवे और सब से लीगल मैटर्स रे एडवाइस किए करिवो गवर्नमेंट को अटॉर्नी जनरल फर्स्ट काम गवर्नमेंट को एडवाइस करिवाटा लीगल मैटर्स रे सेकंड टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ द लीगल कैरेक्टर दैट आर असाइन्ड टू हिम बाय द प्रेसिडेंट डेफिनेटली द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन कन्फर्ड बाय हिम
बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ जदि कॉन्स्टिट्यूशन तांको एक्स्ट्रा किछि ड्यूटी दिए ताले से ड्यूटी मध्य करिवार दायित्व कहार ना आपनकर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रो देखो वर्तमान द प्रेसिडेंट हैज तो अच्छा प्रेसिडेंट कौन कौन असाइन करंती काम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को देखो टू अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल द केसेस इन व्हिच सुप्रीम कोर्ट इन व्हिच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न जो सब केस रे सुप्रीम कोर्ट रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेजेंट हवा जरूरी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री तो निजे आसीबेनी से जगह रे तो वकील आसीबो से टाइम तो वकील किए ना अटॉर्नी जनरल ही गवर्नमेंट तरफ अपीयर होंती सुप्रीम कोर्ट रे to represent the government of India in any reference made by the president to Supreme Court under Article 143 of the Constitution. See, what is Article 143? 143 very famous article जोटी कौन को भी आपनकर legal case जोट देखि आपनकर प्रेसिडेंट कौन करंती से केस को रिफर करि पारंती सुप्रीम कोर्ट को लीगल एडवाइस पई that is the advisory jurisdiction of the supreme court रा से article 143 तो सेठी प्रेसिडेंट कोन करंती रेफरेंस नहीं पारंती एडवाइस नहीं पारंती सुप्रीम कोर्ट रो हाउएवर कोन सेटा प्रेसिडेंट कोन फोन रे कथा है चीफ जस्टिस सहित ना ए सब जिंस कहा थ्रू रे हबो आपनकर ना अटॉर्नी जनरल थ्रू रे हबो अटॉर्नी जनरल से क्वेश्चन नहीं कि जीवे सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट रो लीगल एडवाइस नहीं किया सिबे दैट इज डन बाय अटॉर्नी जनरल ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 143 प्रोबेबल क्वेश्चन नेक्स्ट to appear in any high court in any case which government of India is concerned जदि को केस रे जदि आपनकर सेंटर एंड स्टेट डिस्प्यूट अछि और सेठी आपनकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हाई कोर्ट रे अपीयर हवार अछि सेट रे मध्ये आपन को किए जीवो गवर्नमेंट तरफ रु ना अटॉर्नी जनरल जीवे नेक्स्ट विल कि व्हाट आर द डिफरेंट राइट्स एंड लिमिटेशन ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया राइट्स कोन कोन अछि एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड he has the right to speak right to take proceedings in the both the house of parliament ये बहुत इंपोर्टेंट जिंसो कि से पार्लियामेंट रो प्रोसीडिंग्स रे पार्टिसिपेट करि परिबे नाउ जॉइंट सिटिंग रे पार्टिसिपेट करि परिबे एवं ही इज आल्सो द मेंबर ऑफ कोन ना एनी पार्लियामेंट्री कमिटी रो कोन से मेंबर हि परिबे बट विदाउट एनी राइट टू वोट दे परिबे नाही नाउ ही हैज द राइट टू बी ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया कौनसी कोर्ट कंट्री रो कौनसी कोर्ट रे मध्य से जाई कि एज ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर तो जेहेतु से हाईएस्ट लॉ ऑफिसर से कौनसी कोर्ट को मध्य जाई कि ही हैज द राइट ऑफ ऑडियंस थर्ड कोन ही एंजॉयज ऑल द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज दैट आर अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डेफिनेटली बिकॉज़ ही होल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नाउ ही इज एग्जीक्यूटिव मध्य ही इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव नेक्स्ट कोन ना आपनकर से पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स रे मध्य पार्टिसिपेट करूचंती सो ही आल्सो एंजॉयज all the privileges and immunities that are available to a member of parliament. Now सेठु हमें देखिबा what are the limitations कोन कोन अछि it should not advise or hold a brief against the government of India as जेहेतु से गवर्नमेंट रो वकील तो गवर्नमेंट अगेंस्ट से कोठी आपनकर कहा को एडवाइस दे परिबे नाही कि कहा को कहि परिबे नाही Second, he should not advise or hold brief in cases in which he is called upon to advise or appear the government of India. जदि गवर्नमेंट को से रिप्रेजेंट करूचंती ताले गवर्नमेंट रो अगेंस्ट से को केस रे मध्य पार्टिसिपेट करि परिबे नाही थर्ड जिंस कोन ही शुड नॉट डिफेंड एक्यूज्ड पर्सन इन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस एज आई सेड ही इज ए कोन ना से गोटे होचंती आपनकर पार्ट टाइम जॉब दिस जे कोन तांकर प्राइवेट प्रैक्टिस करि परिबे हाउएवर प्राइवेट प्रैक्टिस रे मध्य से क्रिमिनल केसेस नहीं परिबे नाही मन रखंतु बिकॉज एज ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर से गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करचंती तो गोटे मॉडलर को जदि से रिप्रेजेंट करि देले तो कोन माने गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट रो गोटे जो गरिमा रहिबा कथा सिंस रहिबो नाही तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस रे से पार्टिसिपेट करिवे नाही कि कोन क्रिमिनल केस से नेबे नाही विदाउट द गवर्नमेंट ऑफ परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिशन देला जदि किछि गोटे केस अछि जोटी कि आमे देखुछु कि सामना लोक कोन अछि ना से इनोसेंट अछि बट क्रिमिनल केस रे फसी आइछि से केस रे से चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करि परिबे जदि गवर्नमेंट परमिशन देला देन ओनली ही कैन टेक द केसेस क्रिमिनल केसेस else he will not take any criminal case मन रखितांतु he should not appoint as an director of any company or corporation without the permission of government of India definitely as is the कोन आपनकर हाईएस्ट पोस्ट रचन तो बहुत बड़ बड़ कंपनी माने डाकी नियंती एंती बड़ बड़ आईएएस ऑफिसर हे गला रिटायर्ड जजेस हे गले एवन को नहीं जानती निज कंपनी रो डायरेक्टर एंती बड़ बड़ पोस्ट दे दवा पई तो किंतु जेते बेले जाय से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रे अटॉर्नी जनरल रो पोस्ट
होल्ड करिसंती he cannot accept any appointment as director but without the permission of India government of India रो permission रे जदि government permission देला then से नहीं पारिबे मन रखि थांतु he should not advise any ministry or department definitely government of India को से advise करि पारिबे किंतु individual को ministry को department को से कोनोसी legal advice देई पारिबे नाही जदि जे जाए तांकु unless the proposal or reference is regarded is received through Ministry of Law and Justice Department of Legal Affairs जदि कोनोसी फॉर एग्जांपल होम डिपार्टमेंट अछि होम डिपार्टमेंट को अटॉर्नी जनरल किछि एडवाइस करिवे नाही लीगल मैटर जदि तांकु करिवार थाई सेति में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस गोटे सेपरेट नोटिस गोटे सेपरेट परमिशन लेटर दबो देला परे ही से होम डिपार्टमेंट की डिफेंस डिपार्टमेंट को डिफेंस मिनिस्ट्री को सेपरेट दे परिबे नहले ओनली एज ए होल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एज ए होल से रिप्रेजेंट करंती इंडिविजुअल डिपार्टमेंट को से कोन कोनसी आपनकर लीगल मैटर एडवाइस दे परिबे नाही व्हाट आर द इश्यूज पर्टेनिंग टू द ऑफिस ऑफ एजी इन इंडिया इश्यूज कोन कोन अछि देखिबा कि consent of the criminal contempt cases the precondition of the consent of AG for criminal proceeding under the Contempt of Court Act 1971 may be misused by the party in power simple जिनसो बुझंतु कि क्रिमिनल केस रे कोन आपनकर कंटेम्प्ट लागि जाय तो अच्छा कि प्री कंडीशन ऑफ द कंसेंट ऑफ एजी फॉर द क्रिमिनल प्रोसीडिंग अच्छा जदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोन जदि से केस रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोन जदि परमिशन देला काहाकू अटॉर्नी जनरल को क्रिमिनल केस लढिया पई से केस रे कोन जदि जेहेतु ए केस रे कोन हे परिबो ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मध्य जदि से पार्टी कर देला से केस रे तांको पाकर हाईएस्ट लॉ ऑफिसर अछि तो देयर इज ए प्रोबेबिलिटी दैट देयर वुड बी मिसयूज ऑफ पावर जदि से क्रिमिनल केसेस लढंती नेक्स्ट रिमूवल द रिमूवल प्रोसीजर इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट कैन रिमूव हिम एट एनी टाइम एज ही होल्ड्स द post in the pleasure of the president मन रखि थांतु एंड दिस इज आल्सो ट्रू कि नॉर्मली देखन जसे गवर्नमेंट रो वकील जदि गवर्नमेंट रिजाइन कला से केस रे मध्य कोन ऑटोमेटिकली से रिजाइन कर देबे एटा भी मन रखि थांतु किबा गवर्नमेंट को टाइम रे चाहिले जो वकील चेंज कर दबो बेसिकली तो एंती किछि रिमूवल रो प्रोसीजर नाही दैट इज solely lie in the hand of president प्लेजर डॉक्ट्रिन एज आई सेड कि तांकर टर्म मध्ये किछि फिक्स नाही ऑफिसर टर्म किछि फिक्स नाही ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न कि एज ही होल्ड्स द हाईएस्ट वन ऑफ द हाईएस्ट constitutional post hold करूचंती how can he is allowed to do private practice this is one of the major question जोटा कि इश्यू अछि कि no there is no bar किसी रेस्ट्रिक्शन नहीं प्राइवेट प्रैक्टिस रे कि जोटा कि बेले बेले तांकर जो गरिमा अछि जो पोस्ट रो गरिमा अछि ताकू पूर्ण करि पारे तो दिस इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न नेक्स्ट विल मूव टू द सॉलिसिटर जनरल हु इज सॉलिसिटर जनरल यस आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू फाइंड आउट हु इज द रिसेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सॉलिसिटर जनरल आपण जानंती तुषार मेहता अछंती हु इज द वर्तमान अटॉर्नी जनरल के अछंती देखंतु The Solicitor General for India is the second highest legal officer अछंती Solicitor General सी Solicitor General पई Indian Constitution रे कोनोसी आर्टिकल मेंशन नाही मन रखि थांतु there is another additional Solicitor General मध्ये अछंती so Solicitor General additional Solicitor General they are basically the assistant जे असिस्ट करंती काकू Attorney General को असिस्ट करंती तो Indian government has other legal officers including the Solicitor General additional Solicitor General who support the Attorney General in carrying out his duties. However, only Attorney General's office is established by the Constitution. Yes, under Article 76. ता बाद रे आपनकर Solicitor General आपनकर Additional Solicitor General ऊपर कोनोसी आपनकर कोन नाही बेसिकली कोनोसी constitutional post नाही. However, जेहेतु दुटा पोस्ट अछि so it is regulated by the law officers condition of service rule 1987 rather than the constitution एको किए रेगुलेट करूची दुईटा ऑफिस को law officers condition जो of service rule 1987 मन रखि थांतु next the solicitor general provides legal advice to the government and is appointed for a 3 years term by the prime minister chaired appointment committee of the कैबिनेट मन रखि थांतु दिस इज अ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉलिसिटर जनरल पई टर्म अछि अटॉर्नी जनरल पई टर्म नथिला मन रखि थांतु आवर सॉलिसिटर जनरल ओड 3 इयर्स रो टर्म रहउछि एंड यस आउट इन मन रखि थांतु सॉलिसिटर जनरल एंड आपनकर अटॉर्नी जनरल बोथ आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट बोथ आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट मन रखि थांतु तो 3 इयर्स टर्म अछि सॉलिसिटर जनरल पई हु विल सिलेक्ट देम प्राइम मिनिस्टर चेयर करिथिबा गोटे कमिटी हु इज अपॉइंटेड बाय द cabinet now attorney general has the right to participate in parliamentary proceedings but
cannot cast vote. Yes, as I said already, the Solicitor General, Additional Solicitor General do not take part in the parliamentary proceeding. Only Attorney General ही आपनकर parliamentary proceeding रे participate करि परिबे. Solicitor General, Additional Solicitor General करि परिबे नाही, मन रखिबे. Next we will come to very simple topic, Advocate General. जेंति आपनकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो वकील होचंती Attorney General, स्टेट गवर्नमेंट रो वकील होचंती Advocate General. बहुत सिंपल जिंस, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट. जेंति एटा आर्टिकल 76 मेंशन थिला, एटा आपनकर आर्टिकल 165 अछि. बहुत सिमिलर, ऑल द प्रोविजंस आर ऑलमोस्ट सिमिलर अछि. ये मध्ये आपनकर कोन जो स्टेट असेंबली रे पार्टिसिपेट करि परिबे, सिमिलरली वोट दे परिबे नहीं. ऑल द थिंग्स आर वेरी मच सिमिलर. द एडवोकेट जनरल शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर. सेठी की प्रेसिडेंट थिले, एटी गवर्नर. रेमुनरेशन टा के डिसाइड करिवे, गवर्नर डिसाइड करिवे. द ड्यूटीज, प्रिविलेजेस, फंक्शन, रेस्पोंसिबिलिटीज ऑफ द अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल ऑफ are very much similar to Attorney General. बहुत similar अच्छी similarity, maximum similarity अच्छी Attorney General, Advocate General भितरे. only आपण देखिबे article 165, this is, that is article 76. So this is all about your Attorney General and Advocate General. Let's come to a question, 2022 UPSC question. It is, Attorney General of India and Solicitor General of India are the only officers of the government who are allowed to participate in the meeting of the parliament. वर्तमान ही कहली कि Solicitor General participate करि परिबे नाही, only your Attorney General. तो ये स्टेटमेंट आपन को रॉन्ग हे गला. नेक्स्ट, according to the Constitution of India, the Attorney General of India submits his resignation when the government which appointed him resigns. According to the Constitution of India, the Attorney General of India submits his resignation. कोन Constitution रे किछि मेंशन अछि कि आपनकर रिमूवल ऑफ योर Attorney General विषय किछि मेंशन नाही. सो द स्टेटमेंट इज रॉन्ग. यस, एई जाय ठीक अछि कि Attorney General रेजिग्नेशन दियंती जेतेबे गवर्नमेंट रेजिग्नेशन दी. दिस इज करेक्ट, बट कॉन्स्टिट्यूशन रे किछि मेंशन अछि कि किछि मेंशन नाही. तो ई स्टेटमेंट मध्ये रॉन्ग हे गला. योर आंसर इज डी, neither 1 nor 2. So we have liked the video. Thank you very much.